चलो जी, गुड मॉर्निंग and start the discussion of question answers. So look here, who was the chairman of drafting committee? Who will tell me? Yes, drafting committee के chairman कौन थे? B.R. Ambedkar. Yes, very good. B.R. Ambedkar. Yes, which of the following is written in the preamble of our constitution? So Indian government will be socialist, republic and secular. तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? All of these. Democratic. All of these. Yes. All of these. All of these. Next. So next question. So next question. Which of the following is the national symbol? National anthem is the symbol. National emblem also national All of symbol. these. All of 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 these. How many houses are there in Indian Parliament? There are two Two. houses. Lower house. Upper house and lower house. Lok Sabha and Rajya Sabha. Yes, correct. So answer to Lok Sabha and Rajya Sabha. Now, which of the following is our fundamental duty? So our fundamental duty is to keep All India of these. to respect national All of flag, these. flag and anthem, to protect public property. All of these. Now, All of these रहेगा ना? yes. हाँ. Now, next question. Next question, fill in the blanks जो भी है. One word, correct word लिखना है यहाँ पर. Government work for the welfare of all citizens. Socialist. Socialist. Very good. Socialist. Yes. The Socialist. government of India is made up of the Democracy. people of the country. Democracy. Democratic. India is not ruled by any outsider. Sovereign. क्या कहेंगे बच्चे यहाँ पर? Sovereign. Sovereign. स्पेलिंग अगर मिस्टेक होगी तो अपने पीछे से चेक कर लेंगे. Sovereign. बोलेंगे क्या? Sovereign. All religions are respected and citizens are free to follow any religion. Circular. Yes, very good. Now match the column. Now match the column. President, Prime Minister, Dr. B.R. Ambedkar, Dr. Rajendra Prasad, Lok Sabha. Chairman of the Draft Committee, House of Parliament, Head of the Government, Head of the Country, First President of India. तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर? हमारे पास हो गया एक मिनट. तो प्रेसिडेंट हो गया हेड ऑफ द कंट्री, प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट, B.R. Ambedkar chairman of drafting committee, Rajendra Prasad first president of India, Lok Sabha, House of Parliament. राइट. चलो जी, अब हम लोग एक काम करते हैं. नेक्स्ट वन, ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स. So Dr. B.R. Ambedkar was the first president of India. It is false. Directive principles of the state policy contain the guidelines for the government of proper functioning. It is true. Every Indian citizen has a cultural and educational right. It is true. All Indian citizens must protect and preserve their money. It is कोई प्रोटेक्ट करना, प्रिजर्व देयर मनी, हमारी ठीक है, हम लोग अपनी खुद की मनी को प्रिजर्व करें, लेकिन पब्लिक प्रॉपर्टी तो इट इज फॉल्स. राइट, इट इज फॉल्स. सो फर्स्ट इज द ट्रू, first is false,
second true, third false, third one again true, false, true, false. हो गया? चलिए अब बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट पॉइंट, एंड नेक्स्ट इज द fill in the blanks. The body that look after the needs and welfare of the people living in the cities. तो सिटी के लिए क्या होता है बच्चों? म्युनिसिपल कारपोरेशन. वेरी गुड. नेक्स्ट वन, द कंट्री that has the government for the people, by the people and of the people. किसको? बोलो बोलो. नंबर वन अभी वो तो सोशलिस्ट तो पहले वाला था, अभी तो क्या हो जाएगा? म्युनिसिपल कारपोरेशन. सेकंड डेमोक्रेसी, द बॉडी दैट गिव जस्टिस. म्युनिसिपल कारपोरेशन. एक मिनट में सबको म्यूट करता हूं, एक मिनट. अब आ जाएगी. नाउ लुक, नंबर वन म्युनिसिपल कारपोरेशन, नंबर टू डेमोक्रेसी, नंबर थ्री सुप्रीम कोर्ट, and next one the committee that drafted the laws for the new nation drafting committee. The right given to the every citizen of India, fundamental rights. Next portion is the discussion of general questions, and discussion of general questions. Number one, what were the challenges of free India? बच्चों जैसे ही हमारा इंडिया फ्री हुआ फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, as the India got freedom from the British rule, number one, there was partition of India and Pakistan. So due to the partition of India and Pakistan, Hindu-Muslim communal riots. Hindu-Muslim communal riots. Due to these riots, many of the people got died. जितने millions of the people इस रियोट में मारे गए. Second one, it was a big challenge to decide the form of government, कि हमारी गवर्नमेंट जो है कैसी होगी, which kind of government should be there. तो बच्चों ये गवर्नमेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पर डिसाइड करना, इट वाज आल्सो अ बिग चैलेंज. ये हाथ नीचे कर लो गौरव मेनारिया जी. नेक्स्ट वन, तो नंबर वन, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डिसाइडिंग राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द इंडियन पीपल, इंडियन सिटीजन्स, communal riot. These were the challenges, major challenges. Next one, what form of the government exist in India? The form of government in India, parliamentary form of India. Write any two guidelines. बुक में 2 दिया, हम लोग 3 लिखते हैं, 4 लिखते हैं, whatever we want. तो guidelines mentioned in the directive principles of the state policy. So look here, in the directive principles, the government shall provide proper living conditions for the people. पहले लोगों को रहने लायक कंडीशन प्रोवाइड करना. नेक्स्ट वन, गवर्नमेंट shall ensure work for every citizen. It is the work of government to provide the work, काम सबको प्रोवाइड किया जाए. It says the state shall provide free and compulsory education. Free and compulsory education for all the citizens.
जो भी हमारे सिटीजन है सबको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करना। अरे यार ये गौरव मैनारी जी हाथ खड़ा करके बैठ गए, हाथ नीचा कर लो भाई, हटा लो अपने हाथ को। नेक्स्ट वन, द स्टेट शेल वर्क टुवर्ड्स द अपलिफ्टमेंट of the weaker section, towards the upliftment of the weaker section। जो कमजोर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो पुअर हैं, उनके लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम करना। So the state shall work for towards the upliftment of the weaker sections of the society, like scheduled caste, scheduled tribes, and other backward caste classes। State shall ensure that no one will exploit, किसी को भी एक्सप्लोइट नहीं किया जाएगा। एक्सप्लोइट करना, अननेसेसरी परेशान करना। तो नो वन विल एक्सप्लोइट ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ ऑफ प्लेस, प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ। हम लोग कहते हैं बंगाली है, ये उड़िया है, तो नो वन डिस्क्रिमिनेट on the basis of place of birth, race, religion, caste, creed, gender। ये लड़की है, ये काम नहीं कर सकती, ये लड़का है, इससे ये नहीं होगा। तो दिस इज द डिस्क्रिमिनेशन ड्यू टू जेंडर। नाउ मेंशन द फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। कोई भी आप लोग 3 या 4 fundamental rights you can write over here, 3 to 4। So right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational right, cultural and educational right, right of constitutional remedies, right to constitutional remedies। नेक्स्ट वन, फंडामेंटल ड्यूटीज। हमारी ड्यूटीज क्या है? तो हमारी ड्यूटी है, वी शुड फॉलो द लॉज लेड डाउन बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन हमको लॉज दिए हैं, नियम दिए हैं, हम उन नियमों से अपना काम करें। ऑनर द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, keep country united, keep our surrounding clean, defend the country in time of the danger। जब भी खतरा हो, लड़ाई हो, तो we should defend our country। protect and preserve national property, जो नेशनल प्रॉपर्टी है उसको प्रोटेक्ट किया जाए। नेक्स्ट वन, लिस्ट नेशनल सिंबल्स। कल हम लोगों ने last day yesterday we have discussed the we have written also national symbols। what are the national symbols? National flag, national anthem, national song, national emblem, national song, national animal, national bird, national flower, right? So next question, what do we celebrate on 26th January? What do we celebrate? We celebrate Republic Day or Republic Day on 26th January। It is significance of this. What is the significance of this day? Because on this day we adopt the Indian Constitution। On this day we adopt the Indian Constitution। How can you say that Constitution is the supreme law of the land in India? बच्चों, अगर कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम, किसी भी टाइप की प्रॉब्लम आती है, तो वी विल टेक हेल्प, जजेज ऑल्सो टेक हेल्प विद द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? इन केस ऑफ एनी कंट्रोवर्सी बिटवीन द लॉज, the judges use the
the judges use the Indian constitution to take their guidance. Got it? तो ये हो गया अपना ये चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स।